Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to the Inside Scoop, आपका go-to show for आपकी सारी economic, stock market and global business की news. हमारा aim है कि हम motivate करें और empower करें youth को and पूरी आवाम को, especially to learn and understand और implement करना वो सारी life changing skills और important news जो हम यहाँ share करते हैं. इसलिए हम हर एपिसोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट बुलाते हैं हु हैज़ ग्रेट इकोनॉमिक इंसाइट और जिनका एक्सपीरियंस भी बहुत सालों का होता है इन द कैपिटल मार्केट्स. सो एक जल्दी से स्टॉक मार्केट रिकैप करते हैं एंड देन वी शैल मूव ऑन. सो ये चार्ट अबाउट 10 मिनट पुरानी थी. हमारी मार्केट अभी कैंगरू मार्केट I would say that's what I would call it, because सुबह हमारी मार्केट 400 प्लस खुली थी, then it went 80 points negative, then it went 80 points plus जैसे कि आपके सामने है, और अभी it's 200 points negative. तो अगर मैं इंडेक्स की तरफ देखूं और tell you guys कि what is pulling the index down today, आज प्रेशर किधर है, क्योंकि KSE 100 एक weighted index है. That means according to market cap certain stocks are given more of a weight, तो उनका ज़्यादा power होता है to pull down and pull up आपका index, right? So if we're talking about who's bringing the market down today, it is a Forgy Fertilizer Company, which is 1.2% down, Lucky Cement, which is 1% down, Engro Fertilizer 1% down, Systems, Mari Energy, PSO, OGDC, POL. तो essentially हम देख सकते हैं कि आपका फर्टिलाइज़र और एनर्जी सेक्टर दोनों में काफ़ी प्रेशर नज़र आ रहा है. दिस इज़ फर्स्टली बिकॉज फर्टिलाइजर्स हैव बिन स्ट्रगलिंग रिसेंटली विद यूरिया ऑफ टेक्स टेकिंग अ हिट, फर्टिलाइजर ऑफ टेक्स टेकिंग अ हिट. आपकी जितनी स्टॉक होल्डर और इन्वेस्टर फेवरेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही. देयर हैज़ बिन इशूज़ ऑन द एग्रीकल्चर साइड, जैसे आप लोगों को पता है. देयर हैज़ बिन लॉट ऑफ इशूज़ विद द फिक्स्ड प्राइसिंग फ्रॉम गवर्नमेंट साइड्स की वजह से फार्मर्स को बहुत प्रेशर में आना पड़ा and they stopped growing certain things, due to which fertilizer has not been sold as much और आपका stock in trade जो है companies का has increased. They haven't been able to sell जितना expected था. Other than that, on the oil side आपकी circular debt is supposed to be resolved within the next few days, but mainly अभी जो pressure आ रहा है market में according to all the analysts is कि before entering the IMF program हमारी macro economic जितने indicators थे they were running strong, still are, right, which is why we were able to enter the IMF program. The problem with being in an IMF program is कि हमारी जितनी policies और changes होंगे, right, they have to go through IMF. अब IMF ने क्योंकि हमें लोन दिया हुआ है, their target is to make sure कि हम वो repayment कर पाएँ. इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. For example, आपकी कॉर्पोरेट साइड जो थी they were really struggling with super tax. सुपर टैक्स वॉज रूमर्ड कि आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज कंसिडरिंग कि उसे नीचे लाया जाए, लेकिन बिकॉज हमने इतनी रीपेमेंट्स करनी है अब IMF मे नॉट, दिस इज़ नॉट माई वर्ड्स, एनालिस्ट्स मे नॉट अलाउ कि हम सुपर टैक्स को इंक्रीज़ करें. देयर वाज आल्सो एन एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन इनकम टैक्स, ताकि आपकी सैलरी क्लास पर जितना वेट पड़ रहा है ऑफ द टैक्स बेनिफिट और टैक्स नेट वो थोड़ा कम हो जाए. बट दैट इज़ नाउ ऑल्सो अप फॉर ग्रैब्स. सो वी डोंट एग्जैक्टली नो कि हमारा फेडरल बजट किस तरह का निकलेगा. इज इट रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू द अवाम, या इज़ द मेन मोटिवेशन नॉट गोइंग टू बी इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन मोर देन दैट जस्ट के हम अपनी रीपेमेंट्स कर पाएँ, राइट. एंड ऑफ कोर्स जितना कर्जा लेगी मुल्क उससे ज़्यादा पैसे वापस देने पड़ते हैं. एंड क्योंकि हमारे इम्पोर्ट्स आर ऑलवेज मोर देन आवर एक्सपोर्ट्स और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव रहता है, हम हाई वैल्यू चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते लाइक अदर कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल टेक या IT सॉफ्टवेयर्स एंड एवरीथिंग इन द कम्युनिकेशन सेक्टर. तो उसकी वजह से व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज़ कि हमारे हाई बल्क चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रही होती हैं, लेकिन दे आर लो इन वैल्यू. So this is again a lot to do with constantly जो हमारे शो में बात की जाती है कि एजुकेशन, आपके 2 million people estimated are entering the employment age हर साल, लेकिन आपके पास जॉब्स नहीं है बिकॉज essentially mostly उस वो परसेंटेज जो आ रही है is coming toward labor, right. तो हमारा unskilled labor की percentage in the अवाम is really really high and skilled labor is very low. Due to which what ends up happening is कि पाकिस्तान में you're not creating value as a country. जिस तरह हम स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं, राइट, इट्स वेरी सिमिलर टू हाउ यू एनालाइज अ कंपनी, अ कंट्री. जितनी आपकी गवर्नेंस अच्छी होगी उतना लाइकली है कि वो मुल्क एक्सपेंशन करेगा, इट विल डू वेल. टेक चाइना फॉर एग्जांपल. चाइना ने अपने आप को पर कैपिटा आई डोंट नो सम
I believe 1,000-1,200% increase किया उनकी per capita earning में. I'll have to check that again, don't quote me on it. लेकिन essentially this shows you कि आपका मुल्क is just struggling to get by. It is not creating value in its economy. वो किसी तरह से अपने आप को internationally competitive नहीं कर रहा. फिर क्योंकि हमारे imports exports क्यों इतनी बात की जाती है इस पे, बिकॉज आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होता है, तो दैट मीन्स आपकी करेंसी की वैल्यू इतनी नहीं होती, इट कीप्स डिप्रिशिएटिंग, एंड देन व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि आपके एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस कंपेरेटिव नहीं रहती विद कंट्रीज़ जिनकी सिमिलर एक्सचेंज रेट होती है, जिनके मुल्क में शायद ज़्यादा कंपेरेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे ताकि उनके एक्सपोर्ट्स बेनिफिट कर पाएँ. तो इट्स अ वेरी ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट से एक चीज़ ब्लो अप करके बहुत बड़ी हो जाती है. सो कमिंग टूवर्ड इकोनॉमिक न्यूज़, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो डीजल की प्राइस डिक्रीज़ करेंगे बाय ₹2 एंड प्राइस ऑफ पेट्रोल अनचेंज रहेंगे. नाउ द प्राइस ऑफ अ हाई स्पीड डीजल स्टैंड्स एट ₹254 एंड स्टार्टिंग May 16 पेट्रोल का रेट ₹4.12 पर लीटर ज़्यादा हो रहा है, और वजह यह है कि गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का कट का जो फ़ायदा था वो पब्लिक को देने के बजाय रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स को ट्रांसफ़र कर दिया है. मतलब कि ₹85 बिलियन का जो एक्स्ट्रा बर्डन है अगले 12 मंथ्स में एंड कंज्यूमर पे डाल दिया गया है थ्रू IFEM, OMC's मार्जिन एंड डीलर्स की मार्जिन. रिफाइनरीज कह रही हैं कि उनको लॉस हो रहा है क्योंकि POL प्रोडक्ट्स पे सेल्स टैक्स माफ़ है, लेकिन सवाल ये है कि जब आम आदमी की जेब ऑलरेडी टाइट है तो फिर ये रिलीफ उन तक क्यों नहीं पहुंचा, राइट? आई एम नॉट आस्किंग दिस, आई एम क्वाइट हैप्पी विथ reinvestment of money, but this is just a question which is coming up. And अगर ये पैसा पब्लिक को मिलता तो फिर एवरेज यूज़र ₹2,500 पर ईयर सेव कर सकता था. दैट्स ग्रोसरी, स्कूल फीस, यूटिलिटी बिल्स. जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो फ़ौरन बढ़ती हैं, जब गिरती हैं तो यू नो लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक के you're like okay no we're going to hold off that relief, right? तो पब्लिक को मैसेज बहुत क्लियर apparently according to the पब्लिक हो रहा है कि वो प्रायोरिटी नहीं है. पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं पर फिर डिक्रीज़ होती हैं, तो इसके पीछे व्हाट इज़ द रीज़न एंड व्हाट अफेक्ट्स इट. तो एसेंशली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ने एक बहुत शार्प डाइव लिया है. ब्रेंट क्रूड अब $64 अ बैरल पे है, डाउन 25% फ्रॉम अर्लियर दिस ईयर. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI जो है उसने सिमिलर ड्रॉप देखा है. तो सिर्फ मार्केट नॉइज़ नहीं है, ये ड्राइव हो रहा है बाय जियोपॉलिटिकल मूवमेंट्स. सो व्हाट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस? एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ न्यू US Iran न्यूक्लियर डील. अगर सैंक्शंस लिफ्ट होती हैं, ईरान फ्लड कर सकता है ग्लोबल मार्केट विद एन एक्स्ट्रा 800,000 बैरल्स पर डे. ये बहुत सप्लाई है एंड नेचुरली प्राइसेस आर फॉलिंग. लेकिन असल सवाल ये है कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान के आम आदमी तक पहुंचेगा या नहीं. पाकिस्तान इंपोर्ट्स ओवर 154 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एनुअली. एवरी वन ड्रॉप इन क्रूड ऑयल प्राइस सेव्स अस अराउंड ₹40 to 50 अरब एनुअली हमारे इंपोर्ट बिल पे. तो अगर $15-20 का ड्रॉप होगा तो दैट्स पोटेंशली अराउंड ₹1 बिलियन या 600 मिलियन इन नेशनल सेविंग्स. अब अगर गवर्नमेंट ये सेविंग्स डायरेक्टली पास करती है थ्रू पेट्रोल प्राइस तो ₹30-35 पर लीटर फ़र्क आना चाहिए. तो आप इमेजिन करें अगर पेट्रोल 295 से नीचे आता है, सारी इकॉनमी का कॉस्ट स्ट्रक्चर नीचे गिर जाता है, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, फूड प्राइसेस, सब कुछ. लेकिन यहाँ पैराडॉक्स ये है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिर रही हैं मगर पाकिस्तान में प्राइसेस आइदर फ्रीज हो गई हैं या इंक्रीज होने का चांस है. वाई? गवर्नमेंट और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कह रही हैं कि रुपी डिप्रिसिएशन, PDL टारगेट्स और रिफाइनरी मार्जिन्स को भी कंसिडर करना पड़ता है. ओके, सो नाउ दैट वी आर डन विद दिस, आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू गाइस टू अ वेरी स्पेशल गेस्ट. ही इज एक्चुअली द एक्स फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, someone who has decades of experience आपके कैपिटल मार्केट्स में. आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड टू स्पीक टू हिम. हिज नेम इज डॉक्टर Hafiz Pasha, but we're just going to take a very short break. The reason I'm telling you guys ताकि आप कहीं ना जाएं, grab your chai, grab your coffee, grab your omelets, your bagels, your waffles, your pancakes, whatever you want. Get comfortable. It's going to be a really cool conversation. आप देख रहे हैं The Inside Scoop and I'm Mashal Khan. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप. हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, समवन आई एम रियली एक्साइटेड टू स्पीक टू अबाउट एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. वी हैव विद अस डॉक्टर हफीज़ पाशा, who has served as Federal Minister of Finance and he's also a veteran economist. Dr. Saab, thank you so much for being with us.
فرسٹلی ڈاکٹر پاشا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان نے ریپیٹڈلی اپنے ریونیو ٹارگیٹس انڈر آئی ایم ایف پروگرامس کو مس کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا بجٹنگ پروسیس کیا زیادہ پولیٹیکل کنوینئنس پہ بیسڈ ہے رادر دین اکنامک ریالٹیز, اور کون سے اسٹرکچرل چینجز آپ کو لگتے ہیں شوڈ بی پرپوز ٹو فکس دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ پاکستان میں بائی دا وے از اٹ ان انگلش اور ان اردو؟ Whatever you would like, sir. I would rather speak in Urdu because that gives more access. Perfect. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک بہت مناسب سوال کیا ہے. اب اس سال دیکھیے کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا ریونیوز کا, بڑا ماشاءاللہ ایمبیشس ٹارگٹ تھا کہ تقریباً 40% ہم ایف بی آر کے ریونیوز میں اضافہ ٹارگٹ کر رہے تھے, اور ریونیوز کو 9,300 ارب سے بڑھا کر ماشاءاللہ 12,900 ارب تک لے جانا چاہ رہے تھے. اتنا ایمبیشس ٹارگٹ پاکستان کے پچھلے 30 کم از کم بجٹس میں تو میں نے نہیں دیکھا, اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہر مہینے 100 سے 150 ارب کی کمی نظر آنے لگی تھی, اور سال ختم ہونے تک میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ شارٹ فال جو ہے وہ تقریباً 1200 ارب تک پہنچ سکتا ہے, یعنی کہ ٹارگٹ 12,900 اور اچیومنٹ 11,700. اتنا بڑا شارٹ فال بھی ہم نے پہلے کہیں نہیں دیکھا ہے. لہٰذا ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کر ایک کیئرفل کیلکولیشنز کرنی چاہیے, اور یہ آئی ایم ایف جو کہتا ہے 40%, یہ آئی ایم ایف کو خود فیزیبلٹی اسیس کرنی چاہیے. ایک ملک جس کے شرح نمو 2.5 سے 3% ہو اور افراط زر گر گرا کے 5 سے 6% پہ آ گیا ہو, اس میں ریونیوز 40% کیسے اضافہ ہو سکتا ہے؟ تو with all due respects, the fault not only lies with the ministry but also with the IMF pushing towards completely and totally unrealistic targets. So is it fair to say that this upcoming federal budget could be considered as it's like ایک optics کے لیے جو ٹول ہے and like a PR thing with for پاکستان اور IMF کا جو relationship ہے, and essentially وہ صرف ایک IMF compliant پورا پیپر ہوگا rather than something جو structurally ہمارے ملک کو long term کے لیے improve کرے؟ دیکھیے اس میں کانفلکٹ نیسسریلی نہیں ہے. زیادہ تر جو اس آئی ایم ایف پروگرام میں آئی ایم ایف نے جو اسٹرکچرل ریفارمز پرپوز کیے ہیں زیادہ تر مناسب ہیں, اور آئی ایم ایف کا فوکس اس مرتبہ زیادہ اس بات پہ ہے جو کہ ہماری حکومت کا بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹیکس کے نظام کو براڈ بیس کیا جائے, اور جو سیکٹرز انڈر ٹیکسڈ ہیں یا ان ٹیکسڈ ہیں ان کو ٹیکس کے نظام میں کوشش کر کے محنت کر کے لے آئیں. تو لہٰذا 3 سیکٹرز پہ رجحان ہے آئی ایم ایف کا. سب سے پہلے تو آپ کو تو پتہ ہوگا تاجر دوست اسکیم ہم نے اس سال چلائی ہے, جس میں کوشش ہم نے کی ہے کہ ریٹیل میں جو بڑے ٹریڈرز ہیں ان کو انکم ٹیکس کے نظام میں لے آئیں, مگر کامیابی ابھی تک بہت محدود ہے. دوسری طرف پروونشل گورنمنٹس کو یہ کہا گیا آئی ایم ایف پروگرام میں کہ آپ ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا لا کو چینج کر کے جو ٹیکس ریٹس نہ ہونے کے برابر تھے ان کو نارمل نان سیلریڈ انکم ریٹس پہ لے آئیں. تو پروونسز نے چاروں نے تو لیجسلیشن کیا ہے, مگر کلیکشن جو کہ 1 جنوری سے شروع ہونا تھا وہ اب کہہ رہے ہیں کہ 1 جولائی سے ہوگا, جو کہ مناسب ہے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور تیسرا سیکٹر جس پہ بہت محنت کی ضرورت ہے وہ آپ کا ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی سیکٹر ہے جو بے تحاشا انڈر ٹیکسڈ ہے. تو آئی ایم ایف has given the right priorities in terms of development of the tax system, and I'm sure this is also what our own government wants to do. تو سر پلیز ٹیل می دیٹ ہمارے جو پروونسز کے ساتھ ایکسپیکٹیشن ہے کہ دے نیڈ ٹو انکریز ان کی ٹیکس ریونیوز بائی 74%, تو ایگریکلچر اسپیشلی تھرو ایگریکلچرل انکم ٹیکس جس طرح سے آپ نے ابھی کہا رائٹ,
تو ایگریکلچر کی جو لابیز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. پاسنگ اے بل, ٹرائنگ ٹو پش ریفارم از ون تھنگ, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا از اے ہول سیپریٹ تھنگ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دا گورنمنٹ ول بی ایبل ٹو امپلیمنٹ دس؟ This is one of the most fundamental challenges that Pakistan faces in the realm of structural reform. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور جو آپ کے بڑے زمیندار ہیں وہ ماشاءاللہ زیادہ تر پروونشل اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں. دے آر ان دیٹ سینس ویری انفلوئنشل. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں ماڈسٹ ایکسپیکٹیشن سے شروع کرنا چاہیے. آئی ایم ایف کا خیال یہ ہے کہ ایک سال میں, پہلے سال میں یقیناً 350 سے 400 ارب آپ اٹھائیں فرام دی ایگریکلچرل انکم ٹیکس. دس میں بی انفارچونیٹلی ٹو انریئلسٹک. سو سر, ہمارا جو ایلیٹ کیپچر ہے ان پاکستان, رائٹ, بہت اکانومسٹ اور اینالسٹ کہتے ہیں کہ یہ خود ایک بہت بڑا بیریئر ہے ٹو ٹیکس ریفارمس. تو کیوں ہر گورنمنٹ نے فیل کیا ہے ٹو اسینشلی ٹیکس اینی ون وتھ پاور, رائٹ, بیکاز ہماری سب سے زیادہ جتنا ٹیکس برڈن گرتا ہے وہ سیلریڈ کلاس پہ گرتا ہے. تو how can we as a country, what needs to be implemented? Is it more digitalization? How do we, especially because ہمارے جتنی cash economy ہے, that is how all of these کیا کہتے ہیں, how the elite kind of get away with everything, right? So how can we digitalize things and promote more use of the banking system? کس طرح سے ہم یہ add کر سکتے ہیں in the way that we move money around the economy کہ وہ جو elite capture ہے وہ ختم ہو and everyone begins to be taxed? دیکھیے, میں نے آئی ایم ایف سے بہت مرتبہ نیگوشیٹ کیا ہے, بہت کچھ سال پہلے کچھ دوسری حکومتوں کے لیے بھی کیا ہے. آئی ایم ایف عام طور پہ ان کے ریفارم ایجنڈا بڑا کنزرویٹو ہوتا ہے اینڈ ڈز ٹینڈ ٹو ریفلیکٹ دا پاور اسٹرکچر ان اے کنٹری. بٹ یہ پہلی دفعہ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف ہیز کم وتھ واٹ آئی وڈ کال an attempt at trying to reduce elite capture. اور یہ جو پروپوزل ہیں ان کے کہ آپ ایگریکلچرل انکم ٹیکس کو لے آئیں, اور دوسری طرف آپ جو بڑے ٹریڈرز ہیں جن کے پاس مارکیٹ بیسڈ پاور ہوتا ہے ان سب کو ٹیکس نظام میں لے آئیں. دس از این اٹیمپٹ ایٹ دی آئی ایم ایف سپورٹنگ دی گورنمنٹ ان ٹرائنگ ٹو reduce the extent of elite capture. اگر پاکستان یہ نہیں کر پائے گا تو پروگرام سسپینڈ ہو سکتا ہے. اگر ریونیو میں شارٹ فال بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پروگرام کین اینڈ سڈنلی, اینڈ پاکستان with all due respects does not have the margin at this time to be able to proceed further without the umbrella of an IMF program. We will again start going back towards a default scenario. سو سر, ہماری یوتھ بلج بہت ہے, رائٹ, تقریباً ہر سال 2 ملین لوگ انٹر کرتے ہیں دا مارکیٹ لوکنگ فار امپلائمنٹ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا ملک ایکسپیرینس کر رہا ہے برین ڈرین, رائٹ. سو ایوری ون ہو از انٹیلیجنٹ, کیپیبل, وانٹس ٹو لیو دا کنٹری, فائنڈ جابز ایلس ویئر. دس از ڈیو ٹو اے نمبر آف تھنگز. ایک تو لیک آف ٹرسٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں, ہمارے ملک میں, لیک آف گروتھ ان دا کنٹری, لیک آف ہوپ ایز ویل, اینڈ دین دا فیکٹ دیٹ جب آپ کی کیا کہتے ہیں ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے تو فار دیٹ ایجوکیشن دوسرے ملکوں میں اپرچونیٹیز بہتر ہوتی ہیں. تو یہاں کیوں وائی آر وی ناٹ ایبل ٹو انکریز جتنی ایڈیکویٹ امپلائمنٹ اویلیبل ہے, اسپیشلی فار پیپل who have studied very hard in this country and have the capability to work well here? یہ آپ نے بڑا اہم سوال ریز کیا, اور میں ایک پروفیسر کے لیے یہ جو مسئلہ ہے آپ کے آئیڈل یوتھ کا اور یوتھ مائیگریشن کا, یہ میرے سامنے ملک کا ون آف دا موسٹ سیویئر اسٹرکچرل پرابلمس اور انیڈیکویسیز ہیں. میں آپ کو 1-2 اعداد شمار پیش کر دوں. ہم نے جو ریسرچ کیا ہے پچھلے دنوں, اس ملک میں جو آپ کے نوجوان ہیں جو نہ روزگار حاصل کر پائے ہیں کوشش کرنے کے باوجود, یا جنہوں نے
नौकरी तलाश करना ही छोड़ दिया है, यानी कि कम्प्लीटली आइडल यूथ का नंबर जो है वो 2 करोड़ यानी कि हैरत अंगेज के 2 करोड़ तक पहुंच चुका है, और इसमें 40% नौजवान जो हैं मर्द हैं, और ये बड़ा सेंसिटिव ग्रुप है, तकरीबन 80 लाख का। और खुदा न खास्ता ये दिस इज़ लिंक टू दी you've heard about the Arab transfer which took place when this measure was undertaken earlier in other countries where there is a tendency for the youth to rebel. We have already seen this happening in Bangladesh despite better economic conditions. तो बाहर माइग्रेशन तो करते हैं इनमें से कोई 8 या 10%. The real problem is with the youth जो पाकिस्तान में रह जाते हैं और बेरोजगार और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आइडल. ये बहुत ही अफसोसनाक हालात हैं. किसी एक मुल्क की एनर्जी और डायनामिज्म उसके यूथ पर डिपेंड करती है, और हमारे यहाँ तकरीबन 1/3 of the youth in the country are idle. This is truly a tragedy of extreme proportions for a professor particularly who educates and teaches youth. Most definitely, sir. So, abhi one problem that I face as someone जो advocate करती है for investment for the capital markets is कि a lot of my audiences, I speak mostly on the mutual funds, on having direct exposure through in the stock market, about studying companies, finding value, and just financial literacy and education overall. One thing, I think the problem जो मैं सबसे ज़्यादा face करती हूँ is लोगों का बहुत ज़्यादा interest है in क्रिप्टो, राइट? तो जहाँ हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटेड मार्केट है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इवन इफ यू गो टुवर्ड द म्यूचुअल फंड्स, देयर डिफरेंट एलोकेशंस, बट द वे दैट कंपनीज लाइक बाइनेंस एंड ऑल ऑफ दीज इंटरनेशनल DXs हैं, दे हैव बीन एबल टू कैप्चर आवर यूथ, राइट? हमारी लोकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट, वेदर इट इज़ PSX, वेदर इट इज़ PMEX, वेदर इट इज़ आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, या वेदर इट इज़ द ब्रोकरेजेस. तो why is it? Clearly it's not a masla of interest, right? Clearly आपकी अवाम wants to make money, they're looking for avenues, लेकिन locally हम उन्हें capture नहीं कर पाए हैं. आपको क्या लगता है कि उसका shortfall कहाँ से आया है? Who's maybe making a mistake, and what is that mistake? Why are we not being able to pull अपनी अवाम toward local investments? जी, आपने बिल्कुल एक और बहुत अहम इशू रेस किया है. माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी स्टडी की है पाकिस्तान के हालात के बारे में. देखिए, ना सिर्फ हमारा इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है वो हद से ज़्यादा गिर चुका है. अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में कुल इन्वेस्टमेंट जो होता है पिछले साल हुआ है 11% है GDP का, जबकि किसी एक मुल्क बांग्लादेश या हिंदुस्तान या कोई और मुल्क में ये 30% तक होता है. दूसरी तरफ जो और उससे ज़्यादा भी परेशानी की एक नई बात पैदा हुई है कि जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स को आप रेकमेंड कर रही हैं कैपिटल फॉर्मेशन के लिहाज से, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको हैरत होगी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का पैमाना जो है वो पिछले साल 25 साल पहले के लेवल से कम था. और पैसा कहाँ जा रहा है? जो भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट. दिस इज द ट्रेजेडी. एंड वी हैव नॉट गिवन एडिक्वेट इंसेंटिव्स टू आवर एंटरप्रेन्योर्स. हमने देखा है एक वक्त आए हैं पाकिस्तान की तारीख में मुख्तलिफ वक्तों पर जब हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत अच्छा काम किया जी. तो उन्हें मौका दें, इंसेंटिव्स दें, एनकरेज करें. बैंकिंग सिस्टम शुड फोकस ऑन दिस एंड फोकस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. पाकिस्तान $3 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान इससे 100 गुना ज़्यादा कर रहा है. तो ये बात जो है, देखिए, दिस रिक्वायर्स इनिशिएटिव, एंटरप्राइज, creativity on the part of the government first.
Yes. to promote these activities, and then we can see at the ground level our entrepreneurs will inshallah come and do the right things. Sir, thank you so much for that. So, my final question to you is कि one thing जो हम सब ने witness की है कि जब भी हमारे मुल्क के थोड़े बहुत हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, a very critical point for our nation, जो एक critical point इतना नहीं होना चाहिए जितना पाकिस्तान में, is change of government. जब पुरानी गवर्नमेंट जाती है, elections होते हैं, the new one comes in, तो you see immediately there are subsidies on the fuel side, there are subsidies on electricity, आपके interest rates according to government के जो goals हैं and gaining favor of the अवाम वो fluctuate करना शुरू कर देते हैं. तो काफ़ी टाइम से I've been asking people on my show, आप जैसे जो लोग जिनका इतनी great reputation and so much experience in the capital markets है, कि is there any possibility कि हम multiple political parties को join करें and get them to agree on a charter of economy of some sort, जहाँ वो decide करते हैं on certain points कि हम इनके साथ नहीं खेलेंगे because these are very detrimental for the long term effect of our country. This is yet again आपका एक बहुत मुनासिब observation. और मैं आपसे ये कहता चलूँ कि 4 साल पहले इस प्रोफेसर ने बड़ी मेहनत करके एक चार्टर ऑफ द इकॉनमी की किताब पब्लिश की थी और उसको बैकिंग थी फ्रॉम द जर्मन फाउंडेशन. सो I presented personally copies of this to the major political leaders of Pakistan at that time, including Shahbaz Sharif Saab, Bilawal Bhutto and others. और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फॉलो अप ज़ीरो था, ज़ीरो. लिहाजा हम जैसे प्रोफेसर तो चुपचाप कमरों में बैठकर मेहनत करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन सप्लाई की जाए. बड़ी मेहनत से मैंने ये कंसेंसस टाइप इकोनॉमिक प्रोग्राम और एजेंडा डेवलप किया था, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस पे कोई आगे चलकर कोई इस पे तवज्जो नहीं दी गई है. This is very sad. You are absolutely right. The country is in such dire straits that we have to now have a political consensus on the economic reform agenda, and that should remain implementable and doable irrespective of which government is in power. Thank you. Sir, is this charter of economy that you suggested, is this available to the public? हम पढ़ सकते हैं कहीं? Yes, it is available. You can go to the German Foundation. I will send you the details. If you can send me an email, I will send you myself a copy. Okay? Done. Perfect. Sir, thank you so much for being with us on the show. I really appreciate it. It was lovely to speak with you. I am a fan of your work, and I hope, inshallah, that you will be with us in person one day. Best of luck, and hopefully we'll be able to do something in this country. Inshallah. Keep up your efforts. Thank you. और आप लोगों से मेरा मशवरा है, I will be posting सर की जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे पेपर है, I will be posting it on my socials. ये चीज़ें इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं. व्हाट इज़ द चार्टर ऑफ इकोनॉमी? एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी एसेंशियली पेपर जो आपको जो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी साइन करती हैं कि मुल्क इधर से उधर हो जाए, गवर्नमेंट ये आ जाए, वो आ जाए. ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने नहीं हाथ लगानी है इनको. व्हाट आर द इफेक्ट्स? मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर लूँ इस चीज़ पे. द इफेक्ट्स आर कि फॉर एग्जांपल आपके मुल्क की इन्फ्लेशन बहुत हाई है, लेकिन आपने इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो कर दिए. इंटरेस्ट रेट को नीचे या ऊपर क्यों ले जाया जाता है? इट इज़ बिकॉज जब आपको कंज्यूमर स्पेंडिंग डिक्रीज़ करनी होती है तो आप इंटरेस्ट रेट हाई कर देते हैं ताकि लोग अपनी जो अमाउंट्स हैं वो सेविंग्स अकाउंट में डालें इन द ग्रीड फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड of high returns from savings accounts and banks, right? And of course आपके T-bills, PIBs ये सब इनकी भी yields improve हो जाती हैं. अब जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, दैट मीन्स कि आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि आपका जीडीपी डिक्रीज हो गया, यू हैव टू इंक्रीज दैट, तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स एक्सपेंशनरी. वहाँ से दे वांट यू टू इंक्रीज योर कंज्यूमर स्पेंडिंग, सो वो आपको वाया इंटरेस्ट रेट्स एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि आप बैंक से पैसा निकाल के
باقی جگہوں میں خرچیں. دس کمز ان دا فیس آف آپ کی کار فائنینسنگ بڑھ جاتی ہے, آپ کی بزنس فائنینسنگ بڑھ جاتی ہے, بیکاز دا کاسٹ آف بوروئنگ ڈکریزز. تو جب گورنمنٹ آ کے ان چیزوں کو فلکچویٹ کرتی ہے اتنی ریپڈلی, تو اس کا جو افیکٹ آن انفلیشنری پریشرز ہوتا ہے وہ بہت ڈیٹریمنٹل ہوتا ہے فار دی اکانومی. اٹ کین ان این اکانومی جہاں آپ کو کنٹریکشنری مانیٹری پالیسی ریکمینڈ کرنی چاہیے, وہاں وہ آپ کی انفلیشن کو بڑھا سکتا ہے, اینڈ وائس ورسا, رائٹ. تو چارٹر آف اکانومی اگین آپ کی اگر گلوبل فیول پرائسز, آپ کا کروڈ آئل WTI یا برینٹ ہو, جو بھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں, وہ بہت ایکسپینسو ہوا ہوا ہے. یہاں آپ نے سبسڈی دے دی. واٹ از اے سبسڈی؟ A subsidy is when the government on behalf of the awam has to make the difference of that payment. What ends up happening? آپ کا امپورٹ بل تو وہیں کا وہیں ہے, بلکہ تھوڑا انکریز ہو جائے گا. لوگ بولیں گے چلو یہ تو سستا ہو گیا تو ہم زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں. تو اس کا افیکٹ آپ کو ابھی نہیں نظر آتا. ابھی تو بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ امیزنگ آپ کی فیول پرائسز گر گئی ہیں, بیکاز آف دیٹ آپ نے اپنی الیکٹریسٹی کی پرائسز نیچے لے آؤ, واؤ اتنا سستا ہو گیا. لیکن گورنمنٹ اسٹل ہیز ٹو پے دا سیم اماؤنٹ, بیکاز گورنمنٹ تو انٹرنیشنلی ڈیل کر رہی ہے ان چیزوں سے, رائٹ. گورنمنٹ ایون اگر الیکٹریسٹی کی بات کی جائے تو وہ پھر بھی اتنی ہی کیپیسٹی پیمنٹ کر رہی ہے. وہ ہم سے کیوں لیتے ہیں؟ بیکاز دے ہیو ٹو پاس آن دیٹ کیپیسٹی پیمنٹ ٹو آپ کے IPPs, رائٹ. جو ایون دا کیپیسٹی پیمنٹ جو ہم پاس سے پے کر رہے تھے ٹو IPP جو بند پڑے ہوئے تھے. Why was that? Why was the government pushing for that so much? Which is why the Charter of Economy is so important, تاکہ آپ کی نئی گورنمنٹ جب سوئچ ہوتی ہیں everyone has one goal کہ اکانومی کو پروٹیکٹ کیا جائے. بیکاز عوام کو یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی, وہ اگلی گورنمنٹ کو بلیم کر رہی ہوتی ہے. لیکن حالانکہ پچھلی گورنمنٹ نے اتنی چیزیں خراب کر کے چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگلی گورنمنٹ آتی ہے تو لائک oh my god, we have so much fixing to do. This is exactly what we try to explain to you guys with 365 News, with the Inside Scoop. And especially میری efforts, ہمارے content والوں کی efforts, our producer Shadil, his efforts are all in line with the fact that ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بالکل پتا ہو کہ کون جو چیز کر رہا ہے, کون سی گورنمنٹ جو چیز امپلیمنٹ کر رہی ہے, کیا وہ واقعی آپ کے فائدہ میں ہے, یا وہ صرف چاہتے ہیں کہ فی الحال آپ کو وہ بہت اچھے لگ رہے ہوں, تاکہ پھر بعد میں جب گورنمنٹ کا چینج ہونے کا ٹائم ہو تو پھر ان کے اوپر ساری بلیم آئے, and the previous government gets away scot free. So thank you so much for watching today's episode. I really hope, اگر آپ لوگوں نے مس کیا, we had Dr. Hafiz Pasha, who's ex-Federal Minister of Finance with us. بہت اہم باتیں کی ہیں. He spoke about, انہوں نے ایک پیپر پبلش کیا تھا which he presented to the government and different political parties regarding a charter of economy. I really hope you guys will read that. I'll be posting it up on my socials, so check those out. You guys know to meet me on Mashalverse, and I shall see you guys on Monday now at 11 a.m. So have a great weekend. Do some studying. آپ کی circular debt کی news چل رہی ہے, go study it, see کس stock پہ کون سا effect آ سکتا ہے, and invest accordingly, and take care of yourselves. Be nice. Karma is real. Always spread positivity and take care of yourself. I'll see you guys on Monday. Khuda Hafiz.